ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬੈਂਡ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1989 ਵਿੱਚ NGO ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਨੇਹਾਲਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਜੋਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ NGO ਸਨੇਹਾਲਿਆ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ NGOs ਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ NGOs ਸਿੱਖਣ ਸਨੇਹਾਲਿਆ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ, ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੈਲਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਲਕਰਨੀ, we welcome you to the stage.
श्रद्धेय बाबा जी को मेरा प्रणाम। आज यहाँ पे आपके साथ बात करने का अवसर मुझे मिला है, इसके लिए मैं खुद को बहुत खुश नसीब समझता हूँ। I consider myself fortunate that I got a chance to speak with you on this wonderful gathering. जब मैंने काम की शुरुआत की थी उसको अभी 37 years हो गए हैं। I started my work 37 years ago, and today I got a chance to present some gist of my story in front of you. Punjab is a land of saints like Guru Nanak, and Punjab is a land of warriors like all gurus of Sikh religion. Also, the Punjab is a land which has taken a great initiatives from our freedom movement, and also contributed a lot to the spirituality and the humanity. And the present convention, which is dedicated to compassion, humanity, kindness, humility, is also symbolic with the tradition of Great Punjab. When I was in 8th standard in 1982 and I was going to my class, I belong to city of Ahmednagar, which is in Maharashtra, and it is the big army establishment. So when I was going to my class, I used to pass through a red light area, and I used to see the girls of my age. Criminals brought them there, forced them to do the prostitution, and I was always thinking why this injustice is, because my parents were teachers, and I was thinking why it is happening with some other girls of my age. They should be with me in schools, but some people force them, use them for a flesh trade. And there I thought a lot, and I don't know what to do, but when I was in college, India has progressed a lot. हमने बहुत तरक्की की है, हम चांद पे गए हैं, हमने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बने हैं। आज हम भी इतने ताकतवर हुए हैं कि हम पूरे विश्व का खात्मा 1 मिनट में हम भी कर सकते हैं, जैसे और भी कुछ देश हैं, बड़े देश जो कर सकते हैं। तो हम लोग इतने ताकतवर हुए हैं। जो देश करुणा, अहिंसा और मानवता का संदेश देता था, वो आज अपनी ताकत यहाँ महसूस करता है। लेकिन जब हम देखते हैं तो आज भी जन्म पर आधारित जाति प्रथा है। स्टिल वी आर इन द बाउंड्रीज ऑफ बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री। कुछ जातियों को बहुत ही खराब काम मिले हैं। सम कास्ट वेयर थ्रस्टेड वेरी बैड काइंड ऑफ जॉब्स। तो एक कम्युनिटी है जो नोमैडिक कम्युनिटी, वो पूरे भारत में अलग अलग नाम से उसको जाना जाता है। देयर इज वन कम्युनिटी, नोमैडिक ट्राइब कम्युनिटी इन इंडिया। इट इज नोन बाय डिफरेंट काइंड ऑफ नेम्स इन ऑल ओवर द इंडिया। सो इट इज इन महाराष्ट्र ऑल्सो। उस जाति का मेरा मित्र था, और उस जाति के साथ बहुत ज़्यादा जाति होती थी, क्योंकि यहाँ की महिला और औरतों को प्रोस्टिट्यूशन के लिए फोर्स किया जाता था। तो जब मैं अपने दोस्त के पास गया और मैंने देखा कि उसकी 16 साल की बहन इज फोर्स टू डू अ प्रोस्टिट्यूशन, 40 साल की माँ भी कर रही है, 70 साल की बुढ़ी दादी भी, उसके ऊपर भी दबाव डाला जा रहा है, वो भी उसी प्रोफेशन में अटकी हुई है। और मेरा दोस्त जो मुझे ले गया था वो बड़ा बेबस था। तो मैंने कहा क्या कुछ हो नहीं सकता? उसने कहा कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो मार ही देंगे। एंड एट दैट पॉइंट आई थॉट इफ हियर, बिकॉज वी कैन डिसाइड वेयर टू डाई बट वी कांट डिसाइड वेयर टू टेक द बर्थ। मैं एक फलाने परिवार में पैदा हुआ तो उसकी जात, धर्म, कर्म सब मुझे चिपक जाए। उसी प्रकार से अगर मैं टीचर के परिवार में पैदा नहीं होता और मैं यहाँ पैदा होता, इफ आई कुडंट गेट बर्थ इन अ टीचर्स फैमिली, एंड इफ गॉड प्लेसेस मी हियर इन अ ब्रॉथल, एंड इफ आई सी माई ओन सिस्टर, ओन मदर forced to do the profession, what can I do? Can I just see and say, oh, it is very bad, someone should do a charity, someone should be kind with them and just release them, or I will do something to immediately rescue them and to give them a human life? And my mind says I have to do something, some action is needed. And then I have started Snehalaya. So Snehalaya is a long 37 years journey. In a small time I can't tell you everything, but we have brought a big change.
And the source of inspiration behind all this change is this humility, kindness. So we have started rescuing the miners. We have fought a great battle. We have fought more than 700 cases. And in today's world, I am telling you, getting a donor is very easy. But getting a witness and punch against some stalwarts in the society who are doing wrong thing, it is very, very difficult. But we fought 700 battles, and in most of the cases we got convictions. And all these people using minor girls, doing their trafficking, it was stopped in the major part of Maharashtra because of our initiative. Because there are very good laws in India, but there is no implementation and there is no conviction. If the conviction is not there, then people don't afraid of law. We know we are all as part of India. So we have done the convictions, and in my region, like I belong to Ahmednagar district, now it is Ahilya district. So there are 5,000 women in prostitution, but you will never find a single minor because of this battle. And they got a humanly life, and we have a school, rehabilitation center, hospitals, so everything which is contributing their life, useful to shape up their life. So the point is कि आज की दुनिया में हम देखते हैं कि इतनी सारी ज़्यादतियाँ बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ होती हैं. अगर हम अपने देश का चित्र देखें, इफ़ वी लुक एट इंडियाज मैप, 15 lakhs गर्ल्स आर किल्ड इन द वोम ऑफ द मदर एवरी ईयर. 15 लाख बच्चियों की हर साल गर्भ में हत्या हो जाती है. 20 लाख लोग सड़क पे घूम रहे जो मेंटली स्किज़ोफ्रेनिक है, इल है, उनको कोई ट्रीटमेंट नहीं है. आधे भारत में आज भी कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं है. आपके पास पैसे भी होंगे तो भी आपको दवा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो शेड्यूल एक्स ड्रग है. इवन इफ यू हैव द मनी, यू विल नॉट गेट अ ड्रग फॉर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट बिकॉज इट इज अ शेड्यूल एक्स ड्रग एंड इट इज बैंड. यू कांट गेट इट विदाउट द प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन. 55 लाख औरतों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन थोपा गया है. यूनिफेम, जो यूनो का महिलाओं के लिए काम करने वाला संगठन है, इट सेज that 2 lakhs more women are trafficked every year from India for the international slave trade. पूरे भारत में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे आज भी मजदूरी कर रहे हैं स्कूल छोड़ के, जबकि इतना सारा सर्व शिक्षा अभियान पूरे देश में काम कर रहा है. इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग इंसानियत को बचाने में, मानवता को बचाने में, काइंडनेस में कमी पड़ रहे हैं. और ये अंधेरा जो है वो अंधेरा बढ़ ही रहा है. सो डार्कनेस इज ग्रोइंग. एंड इन दिस ऑल कॉन्टेक्स्ट, व्हेन आई लुक एट बाबाजीज एफर्ट्स, आई फील दैट ही इज डूइंग द कंप्लीटिंग द अनफिनिश्ड agenda of all prophets, all saints from this holy land of India and also from the globe. मुझे ऐसा लगता है कि सही में आज की तारीख में पूरा विश्व बटा हुआ है. गाजा में 1 लाख बच्चे मरते हैं, तो हमारे में से कुछ लोग सोचते हैं मरने दो यार, कहाँ अपने मजहब के हैं. यूक्रेन में लोग मर रहे हैं, लोग सोचते हैं कहाँ अपने मजहब के हैं, कहाँ अपने गांव के हैं, कहाँ अपने देश के हैं. तो ह्यूमैनिटी इज इन डेंजर. मानवता पूरे विश्व में खतरे में है. और हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग जहाँ हैं वहाँ पे कुछ तो कर सकते हैं. और मुझे लगता है कि जहाँ आपको कोई भूखा व्यक्ति दिखे तो आपको कहीं ना कहीं गिल्टी कॉन्शियस आना चाहिए कि हम पेट भर खा रहे हैं और कोई भूखा है. ठंड है, कोई ठंड में मर रहा है और हम तो अपने घर में वार्मर लगा के सो रहे हैं. तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी मन में हल्की सी शर्म आनी चाहिए कि यार हम तो आराम से सो रहे, कोई सड़क पे मर रहा है. मुझे लगता है कि छोटी छोटी एक्शन बहुत ज़रूरी है अगर हम ह्यूमिलिटी, काइंडनेस, कंपैशन को बचाना चाहते हैं. और मुझे लगता है कि ये जो भावना है पूरे विश्व में पैदा करने के लिए बाबा जी आपने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं. आपने एक प्लेटफॉर्म पे दुनिया के 45 देशों के लोगों को लाया है. बाबा जी हैज क्रिएटेड अ ग्रेट इनिशिएटिव. ही हैज ब्रॉट मोर देन the people from 45 countries on one dais, and I'm very sure that we all together can bring a small light, because हम कितना भी अंधेरों को कोसे, अंधेरा दूर नहीं हो सकता.
Even if we curse the darkness will not go. We have to light a small lamp, and with that lamp, at least a small corner is enlightened. हम लोग अगर एक छोटा सा दिया अपने ताकत से लगाते हैं कहीं भी, तो एक छोटा सा कोना जरूर प्रकाशित हो जाता है. हम सूरज नहीं बन सकते, लेकिन हम बाबा जी के अनुयायी बन सकते हैं और एक अपनी छोटी एक्शन कर सकते हैं जो ह्यूमिलिटी को, काइंडनेस को बढ़ावा देगी और मानवता को और प्यार को बढ़ावा देगी. अगर आपको अवसर मिला तो आप www.snehalaya.org इस वेबसाइट को देख लीजिएगा. यही काम है जो बाबा जी के आशीर्वाद से पूरे विश्व में हो रहा है. यही काम एक छोटे स्तर पर, जमीन के स्तर पर हम लोग कर रहे हैं और सारे जात धर्म मजहब के लोग इसमें शामिल है. और हम लोग ये मानते हैं कि मानवता को बचाना है तो हमको रचनात्मक काम करना पड़ेगा. वी हैव टू डू लॉट ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क, एट द सेम टाइम वी हैव टू फाइट. उसी वक्त हमें उस मानवता को बचाने के लिए, प्यार को बचाने के लिए, करुणा को बचाने के लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा. और इस भाव के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ. मैं यहाँ रुक, आई विल टेक योर लीव एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर कॉलिंग मी हियर and give me the opportunity to share my few of experiences. Thank you so much. Jai Babaji. Thank you so much. It was very inspiring to listen to your words, and I learned a lot. Thank you. And now we have the great honor to welcome a very special guest who took all the way from Melbourne, Australia, to be with us today. Yesterday she was already participating in our flag ceremony, and now I have the honor to introduce her to you. She is Bethany Cherry, known as an muralist and designer. She works extensively in mural art and public art installations. She is quite invested in conceptual themes like, for instance, conflict. And so it comes that in an interview, she described her mural of Jaswant Singh Kalra as symbolically depicting the activist standing with people and not alone. Cherry's work often engages with community, representation, and public space. And especially the Jaswant Singh Kalra mural work shows her responsiveness to a minority community's experience and the role of art. We warmly welcome you, dear Bethany, to come on stage and share your wisdom and your art with us. I don't know about wisdom, but I'll do my best to talk about art. I think that I want to be clear, I'm not comfortable speaking on this stage to you behind a microphone. I belong behind my art. That's what I usually speak through. But this was an amazing opportunity to travel, to experience, and to also share my story to see if you gain anything from that. Because I think when we're talking about the values of humanity and the themes that we've been talking about today, humility, kindness, and love, I think listening to each other's stories, there's a lot of power in that. And I've been listening to stories, and now I have an opportunity to share my own. I have travelled a long way. Australia's quite a way away, and Melbourne is at the southern point of Australia.
And I was raised very differently. So I was raised under the concepts of Catholicism, and then I went to an Anglican school. And in talking about religion, I think that's a conversation that has a lot of history and philosophy and how we live together and connect with each other, because the world's a big place and everyone is different. And I think one of the challenges this movement will have is relating and connecting to people who are different. And when we listen to each other and we share stories, that's where the humanity is. It is a humble thing to put aside your beliefs and your experiences and give space to another person. It is a kind thing to look in the eyes of someone who has lived a different life, who has suffered, who has lost, and to see that and offer a hand. And it is a loving thing to sit together, understanding that together as a united front, we can make this world a better place for all. And I have, through my art, learnt a lot about historic figures who have spent their life and their energy living in this humble, kind, and loving environment. And as an artist, I like to replicate that, to retell that, so that we all get to experience it. That is one of the powerful things of art, is we get to see these stories and live these experiences and learn from their messages. And a few months ago, this was one of the biggest moments in my life. I came across a story of Jaswant Singh Kalra and his work and his activism and his kindness and his humility. And I made a lot of friends in the process, and together we decided to relive his story so that others can remember and learn from him. And so in August in Melbourne, in Hosier Lane, which for those of you who don't know is a very famous lane for its street art, its freedom of speech and community, we painted a mural of Mr. Kalra to commemorate 30 years since his death. And the impact in community was profound. Alone, I was moved by his story, but I was moved even more when I saw how it resonated with the people around him. And that is not just within the Sikh community, that is in the international community. And so similar to this movement of humility, kindness, and love, this story served the whole globe, not just one group. And it is in that belief that united we can make this world a better place, that story has power. He didn't care about differences. He cared about standing up. He cared about protecting. He cared about seeing those who would be hidden. And he put aside his own safety on that path. And that's something I admire. And that's something I want to spend my life doing. And I could talk to you about murals and street art and how important art is to relive these stories and remember and take these stories with us into the future. But I think I don't want to talk about that because everyone has their own concept of art and it may be different to mine. And so if there's an opportunity afterwards, I'd love to hear about your concept of art. I will talk about humility, kindness, and love as it relates to me as an individual, as a young woman who has travelled halfway across the globe to experience this, something so different from anything I'm used to. And that is to say that I am humbled to be here, to have this space, for the trust that has been given to me to tell this story. I think it is outstanding, the kindness that I have experienced, the unquestioning kindness. I didn't need to do anything to be received with warm arms and a gentle heart. And as was said on day one, this is contagious. It is very hard to resist kindness. If someone is kind to you, instinctively, without thinking,
you are kind back. Likewise, humility and love, they are contagious. And so if you live your life with these values, it will spread beyond you, and it will be passed forward like ripples. And so I'm very thankful to see that there is so much of that in this room, but also beyond this room, and I'm grateful to know that it will continue to spread. Thank you so much for your time today, and I look forward to speaking with you. Thank you so much to Bethany Cherry for her touching words on unity and togetherness. For the past few months, a common phrase we've all been hearing is that the fourth HKL conference will be different, something we've never seen before. And I think all of us who got to witness day one of the fourth HKL conference will agree so. So to relive those moments, volunteers have prepared highlights of day one of the HKL conference. So please pay attention to the screens to the sides as we showcase day one of the HKL conference. Thank you. We rise with the sun, hands open wide, walking together, hearts full of light. No name too small, no soul alone. In every face we find our home. Whisper of grace, laughter in air, we lift each other with every prayer. A circle of soul shining above, bound by humility, kindness and love. We are one heart, one song, together we all belong. Let joy be the fire that carries us through. In love we rise, in grace we bloom. Humility, kindness, love our way. One family, one light, one movement. Smiles that heal, hands that share. Joy multiplies when hearts care. Every tear turns into gold when laughter's story is retold. Flow like rivers, gentle and free. Love is the root of unity.
one song. Together we all belong. Let joy be the fire that carries us through. As previously mentioned, the fourth HKL conference truly is different from any other conference that we've held before. The upcoming event is actually quite exciting. There will be a panel discussion held by youth. I would love to welcome to the stage Amrit Kaur from the UK, Gurkirat Kaur from Malaysia, as well as Avneet Kaur from Bulandpuri, Sahib. This panel will be a question and answer session where a member of the audience will ask our panel some deep questions, and I'm trying to find our guest here. I believe it's Mankirat Kaur here from Australia. Please make your way to the stage. Thank you. Good afternoon. My name is Mankirat Kaur, and I'm 11 years old, and I'm from Sydney, Australia. And to all the Aussies out there, good day, mate. Now, I have two questions to ask. My first question is, how do I know that HKL has impacted my life? Amrit Benji? I think it's more that you will see within the way that you see things, the way you approach situations, your outlook on situations, your approach towards people, and just generally the way that you will be within yourself. Benji? Hanji. Sorry. I agree with Benji. It's how things around you look. Things start to look more sparkly, they glisten, they feel more beautiful. Those things that you might have seen before, that might have just been things you saw in the past, you start to notice them, like a butterfly flying, so gentle. And it's also the way that people look at you. People see the change in you. Sometimes you might not see it, but people see it in you. And they notice your gentleness, they notice the softness, and they see those changes in you. Thank you. ਹੁਣੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਢੰਗ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਤੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਡਾਂਟ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। Just before I say my second question, shout out to Jimmy Benji. I love your Keaton. Such a pleasure to meet you. Thank you, likewise. I just figured out that you can speak Punjabi, so my second question is going to be in Punjabi. मैं किन्नी वड्डे भागा वाली हाँ। I know मैनू पता HKL की आ, पर मेरी मम्मी पापा ते मेरी भैन मैं किद्दां समझावां हलेमियां हमदर्दियां ते मुहब्बतां।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਦਿਸ ਜਾਣਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਸੇਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। Hanji, have you ever been angry with a wall? No. No? Do you want to try it? Sure. Okay. Imagine you're scolding the wall. You're so angry. After a while, wouldn't you get tired? Yes. And then it gets boring? Yeah, imagine you're the wall. Someone's shouting at you, and you're not reacting. You're calm. And when that person's shouting at you and you're the wall, eventually they'll slow down and they'll stop. So, to me, that's how you share it with everyone else. When they realize, when they look at you in the midst of conversation, they're like, why is she not angry? Why is she not talking back? I'm not getting the reaction that I want. And then maybe that will help change them as well. Anji. You could also try like doing conscious acts of kindness with them, conscious acts of humility and love. Because people tend to grasp onto experience more than theory. So if they practically see you doing all of that with them, then they'll begin to feel that within themselves, and then they will become that too. If I could say one quick thing to the audience, it would be that please, please, please come to my home country, my home city, for the next HKL conference. Would love to see you all there. And to leave us off on a quick joke, yesterday I was talking to Arvind Tayaji, and well, you see, he doesn't know Punjabi. He, so मैं कल कर रही सी ते ना मैं क्या मेरे सैंडविच गंढे बड़े स्वाद आ ते उन्होंने लग्या मैं क्या मेरा सैंडविच बड़ा गंदा वा ते मैं आख्या नहीं मैं आख्या मेरे सैंडविच गंढे बड़े स्वाद आ ते आंदे PhD हैगी आ पंजाबी च। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨਕੀਰਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਡੂੰਘੇ ਸਵਾਲ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Thank you, dear ones. I feel so inspired to listen to you, and it was so sweet with Mankirat. What a joy and pleasure to be with you. Thank you so much. I can remember in Abbotsford at the third conference, I was asked to tell the audience that the program would come to a closure, and it
literally broke my heart. And I was very sad that I had to say that. And at the same time, I knew, no, it will continue because we are so much connected in our hearts. And today, I can tell you, we now come to the closure of our afternoon part, but we will have a wonderful evening session, namely with a drama of the youth girls. And I had the chance to talk to them last night, and I was very excited, so I think you don't want to miss that. And we will have an amazing performance of our wonderful Tony Childs. She will also perform in the evening, so be there. Don't miss it. And that will still not be the closing part because, wow, this year we have 3 days of HKL. So tomorrow we will continue, and I invite you all to please come. Okay. Okay. So come tomorrow again and share that day with us. We would like to invite the speakers to come to the front and special guests. Respected AK Merchant Ji, Marzaban Zaiwala, Hussain Didi Ji, Krishna Mandava Ji, Girish Kulkarni Ji. Please make your way to the front. Thank you. ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ AK ਮਰਚੈਂਟ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਦ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਫ ਦ ਬਹਾਈਜ਼ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ AK ਮਰਚੈਂਟ बहाई फेथ तो दिल्ली तो बहुत प्यारा नजी आया पिछले साल भी प्रभु ने आपको भेजा था आपकी चरण दूरी देखकर मेहरबानी मिस्टर जायवाला मर्ज़बान
जाय वाला। मर्जबान का क्या मतलब? मर्जबान मार्जिपान एक पेटल है, उससे पर्शियन नहीं, पर्शियन से इसके फ्लावर पर्शियन फेथ से मिस्टर जायवाला पिछले साल भी आप आए थे। मेहरबानी आपकी। बहुत ही very dear daughter of mine. She is known as Sister Didi Hussain. Didi Hussain. How beautiful. Everybody calls me Didi. She came here just for one day, and yesterday she was here last night too, and we all remember how deeply we were touched by her presence. And yesterday I requested her to stay for another day. And we are so lucky that he said through her, yes. Thank you so much. I'm so proud of you. Mr. Krishna Mandava. नहीं बेटे नहीं, प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, हमारा दिल दुखता है ऐसे। आप भगवान का घर हैं, भगवान का मंदिर है। जब ऐसे कोई करता है तो मुझे लगता है कि परमात्मा कर, और इतना पाप हम नहीं सह सकते। प्लीज, आप खुद उसके नूर हो। पहली दफा आए, सच ए ब्यूटीफुल सोल from SSRF, very beautiful, blessed movement. Thank you so much. We all are grateful to you. Another dear son of mine, Dr. Girish Kulkarni, जिन्हां दे अंदर दा डॉक्टर गिरीश कुलकर्णी महाराष्ट्र से, और इन्हां दे अंदर दा दर्द आपां सारियां नूं महसूस होया। We all are deeply touched with the pain you are carrying in you, and that pain, I'm sure, has reached the owner of this temple, and he is going to work through all of us to heal that pain.
Thank you. My daughter Sonali, she came here last year, first time, and Manpreet Singh told me that his sister is coming. And I didn't know what for. I thought must be to give me test. And in every test it's my nature or my fate. I fail every test. So I had no worries because no pressure to no pressure to get any marks. And it was such a beautiful meeting, and ever since there has been many meetings, and I love her. I feel that she has a very big meditation from her previous lives she is carrying with her. And may God bless her and help her complete the task for which she is here to become, and that is to become one with the whole. Thank you. From our side, and I feel it's from the whole audience, we would like to thank from our hearts all the speakers and all the guests that have honored our beautiful gathering yesterday, today, and tomorrow it will go on.
And if any one of you also would like to have a picture with one of our revered guests and speakers, don't be shy, just ask them. And now we come to the final part of our afternoon session. I'm sure that any one of you who is practicing HKL and you start to taste it, the sweetness of becoming more humble, more loving, more kind, the moment you can taste it, it's natural that you want to have more of that. And it's the very same thing I find with meditation. When you meditate and you start getting it, start tasting the sweetness of meditation, then you always want to have more and more and more. So this is why, beloved Babaji, we never can have enough of meditation, especially with you. So we ask you to guide us through the next meditation and help us to experience the sweetness of the Beloved One. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦਿ ਸੱਚ है भी सच नानक होसी भी सच आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच. Time to wake up. Thank you. Tomorrow is, I was going to say unfortunately, but why
unfortunate. There is no unfortunate day in our lives anymore. But tomorrow is going to be the last day of this, the divine inspired, divine driven movement called HKL. And tomorrow we would do the last meditation, and we have to get ready for that. But because tomorrow, with His grace, we will do a totally different meditation which should stay with us for a long time, hopefully forever. And we need to get ready for that. So let's close our eyes. ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਹਲੇਮੀਆਂ ਹਮਦਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਈਰਖਾ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਰਾ, His name is love, ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। His known God is love. And Maharaj Ji says him prem padarth, embodiment of love, embodiment of true love called Ishq, prem padarth. Padarth, something which can be felt, lived, experienced, celebrated. Not a philosophy, not a thought, not an imagination. Pure truth. So let's close our eyes. Come to the forehead, in between the eyebrows. As we saw the other day, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਪਾਓ। ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਤਹਿ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫੋਰਸ behind all our actions is to be loved. That's why we make efforts to become accepted by others. We sacrifice our own
feelings sometime, to become accepted. That should not happen. Love which we long from outside is not love. That's a business, that's give and take, that's a trading. Which took birth out of needs, one or another need. No true love we can find in the world. Conditional love. As long as you do this, I accept you. Conditional love. Only unconditional love we receive from our Creator, from within. Okay, Maharaj says, so humility, kindness and love is our true nature. As we move closer and closer to our true self, you call it soul, Ruh, Atma, any name we can give. As we move closer and closer to ourselves, we start becoming humble, kind and loving, because that's our true nature. So the beauty of this movement is that it has no qualms with anything. It loves every religion. And every religion, strangely, in every religion you will find there are humans too. They are humans too. They also are hungry of the same thing. They also have the same desires, same fears, same insecurity. We all are one, all having the same desires, same thirst. And the purest, the most beautiful, the most enriching, the most satisfying love is love of the divine. Once we taste that, you would no longer search for any love in the world, because you have tasted the pinnacle of love. मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे, मैं परमात्मा दा प्यार कदी चखिया ही नहीं, मैं कदी देखिया ही नहीं परमात्मा दा प्यार किहो जिहा हुंदा। तां ही ते मैं दर दर ते प्यार मंगदी, दूसरिਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਵਾ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ। I have, oh my beloved, I have never tasted the
pure divine love or ishq. Why? Because I never loved him. I never loved him. मैं कदी परमात्मा ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਚੱਖ ਸਕਦੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਲੱਭਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂ ਗਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਦੇਖ ਲੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਕੂਚੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਧਰ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਸੀ। I have never tasted the divine love because I never loved him. Such a pain, such a lament, such a repentance. किन्ना दर्द है न बोलना विच, पीड़ है कि मैं उन्होंने कदी प्यार नहीं किया ते मैं उहदे कोलों प्यार दी आस किस तरह रख। वो जिहदा प्यार सच्चा सुच्चा भर देन वाला, हमेशा लई शांत कर देन वाला, बाकी ते ट्रांजिटोरी होंगे। पूरे एहसास नाल आपां गाउणा। मैं प्यार न, मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे, पाओ करे पाओ प्यार। मैं कदी रब नूं प्यार नहीं किया। I never loved him, so I never tasted his pure love. इन्ना दर्द दे इन्ना बोलना विच पछतावा है, पछतावा है, दर्द है कि मैं क्यों नहीं किया। हाँ जी, कल वांगू ये करना, गले तक पहले विद ऑल द फोर्स। कल नू जो आपां सिमरन करना, उहदे वास्ते जरूरी कि अपना अंदर खुले। It's important that our insides, which we had closed from outside long time ago, protecting our falsehood, and we were wearing a mask. बुरका पा रखिया सी, अंदरों कुछ होर सा, बाहर अंदरों ते झट क्रोध आ जांदा सी, बाहर बड़े शांत जे लगदे सी। तो मैं लुका रखिया, डरदी रही मेरा अंदर कोई देख ना लवे। करना कुछ होर सी। मैं प्रेम न चाख्या मेरे प्यारे, गले तक आना ते महसूस करना अंदर जागन लगता। We will bring all our consciousness up to the throat and feel the insides. There is some movement, some awakening, something is happening within. बहुत बीबे पूरी सुरती सीधे बैठ के ते जेड़े अपने चो खड़े होना चाहते
ਫੀਲ ਫਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। Whoever wants to stand up, you can. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे. There should be pain in this feeling of repentance that I have wasted such a good part of my life in a sleep. By becoming a reactive, I never acted. I only reacted. And once we wake up, we act from within. Otherwise, we react to the outside. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे. ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਭੇਜਣੀ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਬਦਲਣੀ. Let's send our beautiful vibrations beyond the skies together. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे. Still more, all the energy in us, we must spend this so that our mind becomes weak. We must not leave any energy to the mind to have any thoughts. We want to become peaceful. Our mind does not let us become peaceful. With more power, all the power. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे.
बहुत सोना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मैं प्रेम न चखिया मेरे मैं प्रेम न मैं प्रेम रखिया मेरे प्यारे ten var, only 3 times more, but with all the force, energy we have, please. Do not stop until our insides start trembling. Trembling, that's the idea. To make our insides wake up. मैं प्रेम न चखिया मेरे प्यारे still more intensely. मैं प्रेम न किया मेरे प्यारे महसूस करना जी, टम्मी नू महसूस करना. Feel your tummy area. We should feel some movement there, some sign of life, sign of life in the tummy area. Once more, last time. मैं प्यार न किया मेरे प्यारे
ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਉਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਭੀ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਭੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੋਡ, ਅੱਲਾ, Dios, with all the love, Dios, 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 lovingly call him silently, lovingly, and instantly you would feel that some power is responding. Some power is responding to our call with it. Beloved God, Allah, Dios, Ram, Ram, Vaheguru, whatever name you call it, Vaheguru, Vaheguru. See if you detect when we call him, if we are doing it correctly, when we call him, he pulls our navel point inward. See if you can detect. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਤੋ ਪਾਵਰ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਮਿਲਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋਚਣ ਤੋਂ, ਤੂੰ ਸੋਚਣ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤੀ, ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ। Maybe he's saying that yes, I do dwell here. I never left you alone. I have been waiting for you since ages and ages, patiently, lovingly. But you never had time for me. I'm sad. I'm sad. But my nature is not to force anybody. Because true love does not force. It sets us free. Gives us freedom. Some of us say if you can feel
tears welling up in your eyes, that what I have done with my life. What I have done with my life. How really wise I have been. I have been busy projecting to the world that I am very wise, good etiquettes, humorous, all that. Just falsehood. There was no authenticity in that. Okay. Now from ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣੀ ਸੁਰਤ. Now we are going to lift our consciousness from the throat to above. From the throat to above. You can, with closed eyes, you can look in the skies and then take the consciousness from our throat area to up in the skies with all the force. मैं प्रेम न चाखिया मेरे प्यारे पाओ करे. I never loved you. मैं तेनू कदी प्यार ही नहीं कीता. मैनू सारे दसदे सी वो ते अंदर रहिंदा. मैनू लोड़ नहीं पई सी. मैं देखदी सां सारे इदां ही जींदे. पाओ करे ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਾਉਣ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਉਹ ਊਰਜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਜਾਗ ਕੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਇਸ ਲਈ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨਗੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। Singing has such a beautiful power in it that it makes us crazed with love. दीवाना नानक बौराना शाह का पया दीवाना। कहते असी कमले हो गए हैं, असी तो उहदे प्यार च कमले हो गए, दीवाने हो गए। This is how this happened, through singing. Through singing, we fall in love with Him. Through singing, those songs, those utterances of them starts dwelling within us. Through singing, His utterances become lodged in our throat, and again out of nowhere you would feel like singing, because those utterances cannot go down because your insides are filled with them. ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੀਤ ਨਿਕਲਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੀਤ ਨਿਕਲਦੇ, ਉਹ ਗਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੇਠਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। It's गाविए सुन, गाओ गाओ रे सखी, गृह मंत्र। Singing is such a miracle. It takes us to the state of craziness. And His songs, His utterances start staying near our throat, because out of nowhere you would find that you would start singing. Singing would happen out of you. You will not do it consciously. It would just, the urge would come, the singing would happen. Je dilon गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, पाओ प्यारा नाल, तो आपां नूं दीवाना बना दे। इश्क विच जे आही सुरती रही ना दुनिया वाली कि मैं बहुत सियाणा जिहा बन के रहना, सियाणा जिहा दुनिया नूं दिखाउणा, फिर दीवाने हो सकांगे। इश्क दी निशानी है। This is the sign of ishq is that you become crazy to the world and wisest to Him. Crazy to the world and most beautiful to Him. Let's throw away this falsehood. No sky is going to
come down. Let's see who we are. Recognize, see it, and let the dance happen. ਪਰਾਂ ਸੁੱਟੀਏ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਨਾ ਉੱਪਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਈ ਲਈ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੀ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਾਓ ਕਰੇ up in the skies, please. Bow in the throat, kare upward. Bow गले से शुरू करके करे ऊपर चढ़ जाना आसमान में। आसमानी चढ़िए माए, आसमानी चढ़िए, चले आसमानी चढ़िए माए, आसमानी चढ़िए, चले आसमानी चढ़िए माए, आसमानी चढ़िए, चले आसमानी चढ़िए माए। ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਅਸਮਾਨਾਂ 'ਚ ਚੜ੍ਹਦੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼ ਫੀਲ। ਮੈਨੀ ਆਫ ਅਸ can experience this, that as we sing this, let us rise up in the skies. You would feel your consciousness rising up in the skies as steam rising up from boiling water. चल आसमानी चढ़िए माए, आसमानी चढ़िए, चल आसमानी चढ़िए माए, चल आसमानी चढ़िए माए, आसमानी चल आसमानी चढ़िए माए, चल आसमानी चढ़िए माए, चल चल
आसमानी चढ़िए ये है चढ़ती कला, ascending consciousness. Ascending consciousness, we can feel it, it's happening to us right now. This is चढ़ती कला. And थोड़ी देर और बहुत बीबे पूरा शीश तो ऊपर देखना, अपनी सुरती आसमान चढ़ रही. Surti, keep watching above our heads with closed eyes. शीश तो ऊपर सुरती नाल देखना ते महसूस करना सुरती ऊपर में. चल आसमानी चढ़िए माए आसमानी चढ़िए बहुत मेहरबानी, बहुत सुन. 3 बार हो. चल आसमानी चढ़िए माए चल आसमानी चढ़िए माए आसमानी चढ़िए Let's become Divani. Let's push the limits of our consciousness and make it rise upward. Where we, and then also feel, you can feel intoxication. You can feel you are becoming, your body is becoming ungrounded. You can feel it. This is because of the intoxication of pure love. Naam Kumari, intoxication. और करना? हाँ जी? हाँ जी, please. चल आसमानी चढ़िए माए चल
चढ़िए आसमानी चढ़िए चले आसमानी चढ़िए आसमानी चढ़िए चल आसमानी चढ़िए See, many of us can feel something rising from the lower end of the spine upward through the neck and up in the sky. बेटे कंट्रोल करना अपने आप मेहरबानी. Feel it. Sit straight and feel Maharaj rising, our mind's energy which dwells below the navel point. Is taking hold of that and bringing it upward from the back along the spine to up in the skies. बहुत बेसी बहुत ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ. ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਗਾ?
ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ HKL ਤੇ ਪਲੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ 7 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ only child who is part of this beautiful family now. So we should be there at 7 p.m. at the auditorium. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਹ ਛਕਣੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਸਮਝੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਫਿਰ ਵਾਤੜੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਂ ਰਖਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸੁਹਾਗਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਜਾਖਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਾਓ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ, ਬਖਸ਼ੋ। ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ, ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ। ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਰੈਪੀਟੇਸ਼ਨ ਐਵਰੀ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੋਈ ਆਨ ਮਿਲਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। Now let us, the work cut out for us is to win our beloved over with love. Mind is saying, I'm not going to let you. I'm going to show you so beautiful gardens, promises in the world. But we know, now we know how our mind works. ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜਾਣਾ, ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਤੇ ਗਾਉਣਾ। ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ। I have put a bet to my mind that I cannot be stopped by you. I'm going to win my beloved over with love.
ਅਸ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਗਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। ਅਸਾਂ ਪਿਆਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ। ਅਸਾਂ ਦਿਲ ਸੱਜਣਾ